Okay, so let's have a look at gas chromatography. This is the kind of apparatus that we have for gas chromatography. The sample that we need to analyze, we inject it छोटा सा बहुत थोड़ा सा, we require very few milliliters of the sample. उसको पहले किसी सॉल्वेंट में डालते हैं, अंडरस्टैंड दिस थिंग, और फिर उसके अंदर जो सैंपल को इंसर्ट करते हैं, व्हाटएवर यू नीड टू एनालाइज, एंड यहाँ से यू स्टार्ट टू फ्लो इनर्ट गैसेस. योर सैंपल फ्लोज थ्रू दिस, यहाँ पर वो आता है और यहाँ पर डिटेक्टर डिटेक्ट्स व्हाट योर सैंपल इज. अगेन इसमें कौन सा, व्हाट इज आवर स्टेशनरी फेज एंड व्हाट इज आवर मोबाइल फेज, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस. इसमें द मोबाइल फेज is an inert gas, जो हम कॉर्नर से गैस रेगुलेटर से we insert that gas, not inert, sorry, in दूसरी भी होती हैं but मेजरली अक्सर वो inert gases भी हम यूज करते हैं. हीलियम यूज हो जाता है, अदर gases भी यूज हो सकती हैं. yes, सही है. and what is this stationary phase? स्टेशनरी फेज, इसमें वी हैव अ सॉलिड, कोई पैकिंग का मटेरियल हम लेते हैं एंड उस पर वी कोट अ diatomaceous earth. It's a kind of powder, a solid. I'll make it easy for you. Consider this: you have rocks, and those rocks are coated with wax. ये consider कर लो, visualize कर लो. This will help you understand what is technically happening. Now, wax is supposed to be something. Wax, तुम लोगों के दिमाग में, it is supposed to be a non-polar sticky substance. Is that right or wrong? सही है. Now, what will happen basically? Gas के साथ your substances will come and they will try to flow over the rocks, the waxy coated rocks. Now, your components will try to stick to that wax. Why will they try to stick to that wax? Because of interaction, intermolecular interaction. If they try to stick to that wax and you do not want them to get stuck to that wax, so what can you do? You can either make the gas flow very fast, you can heat up the oven more, like a wax to na nikle, but whatever component is trying to get stuck to the wax, फोड़ कर निकल जाए. Is that right? So sooner or later, by making at certain settings, you make sure कि सब कुछ end पे आ जाए. Now the things that are trying to get stuck to the wax, वो देर से आएगी, but आ जाएगी. Is that right or wrong? And obviously we keep a certain settings, say we set certain parameters of the gas flow, the temperature of the oven. All of these are parameters that we set, and we do not need to be concerned about them at A levels. Do not worry about that. We need to understand what happens with the things that will try to get stuck to the stationary phase. The more sticky it is to the stationary phase, the longer it will take to reach the detector. Is that correct? Now, the quantity that we are concerned here is called retention time. What is it called? Retention time. So the more attracted our component is to the stationary phase, the more retention time it will have. Is this clear? Yeah. So now let's make it simplified for ourselves. Stationary phase में क्या होता है? Yes, stationary phase में we have a high boiling point non-polar liquid. An example, the wax, you can visualize a wax, a high boiling point non-polar liquid on a solid support. मैंने क्या कहा? Consider rocks that have been coated with wax. And mobile phase में you have an inert gas, an unreactive gas. Stationary phase क्या है? Be very clear with this. You have a non-polar liquid. So the more non-polar your component is, the more sticky it will be to the stationary phase. What other reason can you have that your component takes longer to reach the detector, apart from just being sticky
इसको जरा क्लियर करो थोड़ा सा। If I have a high boiling point component, if it is non-polar, for example bromine लेता हूँ and chlorine लेता हूँ, दोनों non-polar हैं. Bromine has a high boiling point, so bromine will take longer to reach the detector. Again, these are very vague examples, but just helping you understand. क्या obviously जिस चीज में van der Waals dispersion ज़्यादा, जिसका size of molecule बड़ा है, जिसका boiling point ज़्यादा, even that component will also take longer to reach the detector. Is this clear? समझ में? Identify, analyze. बिल्कुल, तो ये सारे पैरामीटर्स, अगेन आई एम टेलिंग यू, यू आर नॉट द वन हु विल सेट ऑल दीज पैरामीटर्स. ये सब काम हमारे पास अब होता है. सही है. These are the three factors that decide how long your the parameter that we are concerned with here is called the retention time, and that is how long a particular substance takes to reach the detector from the time we have started the flow of gas. इसमें एक दफा मेरे साथ एक गड़बड़ हुई थी when I was on my internship, तो बड़ा मुझे डांट भी पड़ी थी गैस क्रोमेटोग्राफी पे. सैंपल्स डिस्ट्रॉय हो गए थे, बट द एडवांटेज हियर इज दैट इसमें बहुत थोड़ा सा सैंपल जो है ना यूज होता है. तो इवन इफ योर सैंपल गेट्स डिस्ट्रॉयड, यू कैन ऑलवेज यूज मोर, थोड़ा सा ml ऑफ सैंपल. तो सही तरह वो गैस ऑन नहीं की थी, जो प्रेशर और टेम्परेचर की सेटिंग्स थी वो सही नहीं लगाई थी मैंने. सैंपल इंजेक्शन करके, तो सैंपल इंजेक्टर में जाता है और इंजेक्टर इंजेक्ट्स इट इनटू द कॉलम एंड पीछे से द गैस इज सपोज्ड टू फ्लो. तो आपके पैरामीटर नहीं थे, अब आप वेट कर रहे हैं, द ग्राफ इज नॉट शोइंग एनीथिंग, नो नथिंग इज बीइंग डिटेक्टेड. मुझे बड़ी डांट भी पड़ी शुरू में, क्योंकि आई वाज एन इंटर्न, बट सैंपल, क्योंकि कुछ सैंपल्स वाकई बहुत, दे आर वेरी रेयर एंड यू कैन नॉट गेट अ लॉट ऑफ देम. तो इसलिए ये आपके पास बड़ी काम की चीज़ होती है वो, लेकिन सैंपल इस्तेमाल थोड़ा सा होता है, वेरी स्मॉल अमाउंट सैंपल इज रिक्वायर्ड. ओके, सो तीन चीज़ें हमारे पास होती हैं. अगेन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, the more volatile it is, the lower the retention time, the more soluble it is on the stationary phase. And what will decide its solubility? The stationary phase is non-polar. So if you have a very polar component, it will not get stuck to the stationary phase. वो बड़ी आसानी से आपको मिल जाए. And the third thing is the temperature of the column. Obviously parameters आप खुद set नहीं करते, so you do not have to worry too much about temperature of the column, but the above two parameters you really need to be concerned about when dealing with components, because वो आपको different चीजें देगा, बोलेगा इनमें से कौन सा है जिसका retention time ज़्यादा होगा and things like this. Is this clear? Non-polar high boiling point liquid, मैंने कहा ना wax, you can visualize a wax coated on a diatomaceous earth. मैंने कहा rocks पे समझो you have coated, उसी की explanation है ये. वो तीन है कि क्या हो सकता है if I'll let go of a component, या तो it is in the gas phase, या तो it condenses, or it interacts with the stationary phase, उसके अंदर dissolve ना हो जाए. For example दे रहा हूँ, water is highly polar, water उसके अंदर dissolve नहीं होगा लेकिन उसके ऊपर condense तो हो सकता है. So these are the three things that can happen to any particular component that you insert in a gas liquid chromatography. सही है? And obviously these are the three factors or parameters that decide what will happen and how long a particular component will take to reach the detector. Obviously detector पे automatic एक ग्राफ होता है जो detention time के हिसाब से आपको बता रहा होता है. यहाँ तक क्लियर है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता.
मतलब सॉल्विंग मेथड सेम होगा ना, बस सवाल चेंज होता है। मैं एक चीज दिखाता हूँ जस्ट मिनट। Another thing that the gas liquid chromatogram tells us is the percentage composition. वो हमें different components की, not only does it tell us कितने components हैं and how many components do we have, it also tells us the percentage composition. I'll just show you an example. If this is something that I see on a gas liquid chromatogram, these are the two components. These are the kinds of peaks that we see. Just मैंने detector में भी दिखाई थी. These are the kinds of peaks that it shows us. So now if I have these two components on a gas liquid chromatogram, can you tell me their percentage composition? बताओ, दोनों के area निकालो. Area निकाल के you can tell me the percentage composition. Obviously when we do it in the practical life, we are not the ones who are doing it. ये सारा काम computerized होके percentage composition निकल कर हमें मिलती है. You only need to understand what particular components can we have. Yes, so 330. कैसे half into base into height क्या हो गया? So right angle ये half. नहीं भाई, किसी भी ट्रायंगल का हाफ इनटू बेस इनटू हाइट होता है. Do not tell me you are appearing for A2 mathematics. Half into base into height. Yes, so can you tell me their percentage composition? 165 उसका एरिया है, and for the second one 2.5. कैसे? पहले दोनों के एरियाज तो निकालो. Yes, उसका 165 एरिया है. What about this one? 225. When you add both the areas together, you get the total area 165. 390 is your total area. Now you find the percentage composition. Areas का कितना आया? 165 and this one is 225. The percentage composition अगर निकालनी है 165 over 165 plus 225. कितनी आ रही है percentage composition? And the other one? So gas chromatography tells you two things. एक तो what component is present and how much of that component is present. On the other hand, thin layer chromatography only tells you what particular component is present. ऐसा ही है. Is this clear? Retention time, please be very clear कि इसमें your stationary phase is a non-polar liquid, high boiling point liquid. मैंने कहा imagine it as a wax. That will help you understand. जितना ज्यादा नॉन पोलर और हाई बॉइलिंग पॉइंट सब्सटेंस होगा उतना ज्यादा स्टिक करेगा, उतना ज्यादा उसका रिटेंशन टाइम होगा. इज दिस क्लियर?